A very good morning, class. In previous video we had understand the concept of neuron, basically the structure part and the function part, the structure of neuron and the function of neuron, and as well as we had already studied the concept of action potential and the synaptic transmission. Okay, so let's look at these topics and these concepts understand well by seeing a video. So I want to share a video with you. The video is very much related to your topic and it is very knowledgeable. So let's see the video. Nervous tissue. Objective: learn about the nervous tissue and its functions. If a person unknowingly touches a hot object like a kettle, she immediately pulls back her hand. Why does she do this? This happens as the receptors present in the fingers sense the heat from the kettle. The sensory nerves in the fingers absorb this impulse and transmit it to the spinal cord. From the spinal cord, this impulse passes to the motor neuron, which in turn passes this impulse to the affected muscle in the finger, and the person immediately removes her hand from the kettle. This whole process involves coordination among the nerve cells called neurons. These neurons are found inside the spinal cord and the brain. Now let's learn about neurons. A neuron consists of a cell body called soma. The soma is enclosed by the cell membrane and has a nucleus. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The dendrites receive impulses from the adjoining neurons. The other extension from the cell body or soma is a single-branched extension called an axon. Each axon is comprised of a cone-shaped base called an axon hillock that arises from the soma. At the other end, the axon is divided into many branches, from where the signal passing through the axon is transmitted to the other cell via a junction called a synapse. Thus, the information is received by the dendrites and is then sent out through the axon to the neighboring cell. This is how information is transmitted from one cell to another. To summarize, if we unknowingly touch a hot object, we immediately pull our hand away from it. This process involves coordination among the nerve cells called neurons. A neuron consists of a cell body called soma. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The other extension from the cell body or soma is a single-branched extension called an axon. So this is all about neuron, how the neuron is work, what are the parts of the neuron. Another video which is very short, which is also very interesting. So let's see the second one. Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials.
When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. Or it can quiet the message. This happens over and over and over, and with repeated activity, the synapse gets stronger, so the next message is more likely to get through. That way, neurons learn to pass on important messages and ignore the rest. This is how our brains learn and adapt to an ever-changing world. So now you are able to understand the concept of neuron, the structure and the function, as well as the action potential and synapse. Okay, I hope the video is liked by you. Okay, now in this video we had started the basic topic, which is very important, which is nervous system. Okay, the function and the structure of nervous system. Basically, the nervous system is divided into two parts. PNS, that means peripheral nervous system. CNS, that means central nervous system. So first of all, the PNS, peripheral nervous system. First of all, understand what is nervous system. So since our biological structures play an important role in organization and execution of behavior, so we shall look at these structures in some detail. In particular, you will read about the nervous system and the endocrine system, which work together in giving a shape to human behavior and experiences. That means in this section you have understand not only the PNS and CNS as well as the endocrine system also. So because the nervous system is the basic structure जहाँ से हमारा बिहेवियर जो होता है वो गवर्न होता है, हमारे बिहेवियर में जो भी चीज़ें, जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे बिहेवियर की, वो बेसिकली नर्वस सिस्टम से डिपेंडेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम पे. ओके, so basically which work together in giving a shape of human behaviors and experiences. The nervous system. Human nervous system is the most complex and most developed of all living creatures, though the nervous system functions as a whole. For the ease of study, we can divide it into many parts depending on its location or function. On the basis of their location and their function, we divided into two parts, PNS and CNS. But the important point here is that the whole nervous system is work together. So based on location, the nervous system can be divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. The part of the nervous system found inside the hard bony cases, which is known as cranium and backbone. So it classifies as CNS. CNS की speciality क्या है? What is the speciality? The part which is covered with a bony case, which is known as cranium. एक क्रेनियम के बोनी स्ट्रक्चर से ये कवर्ड रहता है CNS का जो भी स्ट्रक्चर है. ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम. CNS का दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दैट्स मीन द सेंट्रल ब्रेन एंड द आवर बैकबोन. दिस इज द पार्ट ऑफ CNS. Okay, and the parts of the nervous system other than central nervous system are placed in the PNS. वो जो भी पार्ट है जो CNS के बियॉन्ड है, जो बेसिकली हमें डिफरेंट ऑर्गन से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, जो हमारी सराउंडिंग बॉडी में, हमारे लिम्स में बेसिकली इन्फ्लुएंस है, स्प्रेड है. दिस इज नोन एज PNS. And PNS can be further classified into two parts, the somatic and the autonomic nervous system. The somatic nervous system is concerned with voluntary action, while the autonomic nervous system performs functions on which we have no voluntary controls. So the organization of the nervous system is systematically presented in the figure 3.3, which is in your book. Okay, वो फिगर मैं ले नहीं पाई हूँ. That's okay. Look at your text. वहाँ पे ये फिगर आपको मिलेगा. Basically the figure of nervous system. Okay, in the nervous system there is a PNS and CNS. In PNS there is a somatic nervous system and the autonomic nervous system.
And in autonomic nervous system there is a two part, sympathetic and the parasympathetic. Okay, so basically autonomic nervous system control the involuntary activities, involuntary behaviors, and the somatic nervous system is control the voluntary action. Okay, now in this section we will do the peripheral nervous system, the PNS. The PNS is composed of all the neurons and nerve fibers that connect the CNS to the rest of the body. The PNS is divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. The autonomic nervous system is further divided into sympathetic and the parasympathetic divisions. The PNS provide information to the CNS from sensory receptors like eye, ear, skin, okay, and relay back motor commands from the brain to the muscles and glands. So basically पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल क्या है? ये एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले करता है, एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है बिटवीन द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड द सीएनएस. ठीक है, ये सीएनएस से जो मैसेज है, जो सेंसरी मोटर मैसेज है, वो देता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को और ग्लैंड्स को, और ग्लैंड और मसल्स या जो भी सेंसरी सेंसेस के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं थ्रू दी सेंसेस, फॉर एग्जांपल आई, ईयर, स्किन, ये रिस्पॉन्सेस हमें सीएनएस तक ये मैसेज को स्प्रेड करती है. ठीक है, सो दिस इज द होल वर्क ऑफ पीएनएस. ये एक कनेक्टिविटी है बिटवीन द सीएनएस एंड द होल बॉडी. सीएनएस की होल बॉडी से कनेक्टिविटी का रोल प्ले करती है एंड सीएनएस के मैसेज को बॉडी ऑर्गन्स तक एंड बॉडी ऑर्गन्स के मैसेज को सीएनएस तक एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स के थ्रू स्प्रेड करती है. ओके, सो दिस द होल अबाउट द PNS. Now the somatic nervous system, the first part of peripheral nervous system, which is somatic nervous system, which control the voluntary actions. So this system consists of two type of nerves called cranial nerves and spinal nerves. दो types की nerve होती है इसमें. cranial nerves which is basically situated in the brain region, head region, and the spinal nerve which is situated in the backbone region. ठीक है, that's mean आपके waist के back waist पे जो आपकी होगी nerves, this is the spinal nerves, and the cranial nerve, that's mean this region, okay, the neck region. So there are 12 sets of cranial nerves which either emanate from or reach different location of the brain. ठीक है, 12 sets of cranial nerves होती है हमारे बॉडी में, and there are 3 type of cranial nerves. ठीक है, so basically there are 12 set of cranial nerves which either emanate from or reach different location of the brain. There are 3 type of cranial nerves: sensory, motors and mix. ठीक है, 12 जो सेट होती है इसमें बेसिकली सेंसरी, मोटर एंड मिक्स टाइप की नर्व्स होती है जो कि हमारे हेड रीजन, हमारे ब्रेन रीजन को अदर बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती हैं. एंड सेंसरी नर्व्स बेसिकली क्या करेगी? सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है जिसमें स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं ऑफ हेड रीजन, फॉर एग्जांपल विजन, ऑडिशन, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारी जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमें आउटसाइड दी वर्ल्ड से मिलती है वो इनको कलेक्ट करती है. इसमें स्पेशलाइज रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और हमारे सीएनएस को सेंड कर देते हैं एंड कैरी देम टू द ब्रेन. ओके, द मोटर नर्व्स कैरी मोटर इम्पल्सेस और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स ऑफ द हेड रीजन. बेसिकली हम मोटर नर्व्स का क्या रोल होता है? वो जो हमारी क्या ओरिजिनेट हो रही है, इम्पल्सेस ओरिजिनेट हो रही है, मोटर इम्पल्सेस हमारे हेड रीजन से उन्हें ले आते हैं हमारे मसल्स तक और हेड रीजन तक ले आते, सेंड करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल्स आर कंट्रोल्ड बाय मोटर क्रेनियल नर्व्स. हमारे आई बॉल्स की जो मूवमेंट है वो किससे कंट्रोल हो रही है? हमारे क्रेनियल, मोटर क्रेनियल नर्व से. एंड मिक्स नर्व हैव बोथ सेंसरी एंड द मोटर फाइबर्स विच कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, जो मिक्स्ड टाइप की नर्व्स होती है इसमें दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की एबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों तरह का फंक्शन ये कंडक्ट करती है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड द मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ये सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन को टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन से रिसीव करती है और उससे सेंड करती है.
So this is all about somatic nervous system. Somatic nervous system is a part of peripheral nervous system, which is basically control the voluntary actions. There are 12 set of cranial nerves, okay, and 3 types of cranial nerves, the sensory, motor and the mixed. ठीक है, cranial nerves basically situated in the head region, in the neck region, okay, और ये basically brain से हमारे whole body को connect करती हैं. Now there are 31 sets of spinal nerve. Now this is all about the cranial nerve. Now look at the spinal nerve. Spinal nerve basically situated in the spinal part. There is 2 part of CNS, brain and the spinal cord. So brain region से जो हमें connect करती हैं the cranial nerves, and the spinal cord से जो हमें connect करती हैं, these are the spinal nerves. So there are 31 sets of spinal nerves. ठीक है, 12 set of cranial nerve and the 31 sets of spinal nerve coming out of our or reaching to the spinal cord, and each set has sensory and the motor nerves. Spinal nerves have 2 function. यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वहाँ पे मिक्स टाइप की नर्व्स नहीं होती, 2 ही टाइप की नर्व्स होती है, सेंसरी, आइदर सेंसरी और द मोटर. 2 टाइप की नर्व होती है, सेंसरी और मोटर, और 31 सेट्स ऑफ नर्व्स होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. एंड द सेंसरी फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व कलेक्ट sensory information from all over the body except the head region. All over body से ये senses receive करती है except the head region. Head region में कौन वर्क करता है? Cranial nerves. Okay, and send them to the spinal cord from where they are then carried out to the brain. और brain से जो भी हमारी information secrete हो रही है, secrete नहीं कह सकते, this is called originate हो रही है, ठीक है, जो भी command आ रही है हमारी brain से उसे अदर बॉडी पार्ट्स तक स्प्रेड करती है द सेंसरी नर्व्स, सॉरी मोटर नर्व्स ऑफ द ब्रेन, एंड सेंड टू द मसल्स बाय द मोटर फाइबर ऑफ द स्पाइनल नर्व. So basically the motor nerves and the sensory nerve collect the information from the other body parts and it's sent to head region, or if the reflex action is conducted by the spinal cord, and the motor nerves basically play a role in a spreading message to head region to the body. Next part of PNS is the autonomic nervous system. Okay, there is 2 type, somatic and the autonomic. So autonomic nervous system, this system govern activities which are normally not under direct control, and individuals not direct control of the individual. It controls such internal functions as breathing, blood circulation, salivation, stomach construction, and emotional reactions. So these activities of the autonomic system are under the control of different structure of the brain. इसका जो कंट्रोल होता है वो बेसिकली हमारे CNS में ही होता है, बट यहाँ पे जो वर्क होता है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है. ऑटोनॉमिक बिकॉज इट फंक्शंस ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रहा है वो हमारी इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ऑटोमेटिक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. ये जो चीज़ें हैं जो इंटरनली हमारे में चेंजेस होते हैं, जो फंक्शन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी ब्रीथिंग, हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, सलाइवेशन, स्टमक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Okay, the autonomic nervous system has 2 divisions, the sympathetic division and parasympathetic division. Although the effect of one division is opposite to the effect of the other. एक हमारा जो डिवीज़न का वर्क है सोमेटिक का फॉर एग्जांपल, वो बिल्कुल ही अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक के. दोनों एकदम अपोजिट वर्क करते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग टुगेदर. बोथ वर्क टुगेदर टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. हालांकि although the effect of one division is opposite to the effect of the other, but both work together to maintain a state of equilibrium of the body. So the sympathetic division deal with emergencies. The sympathetic division is basically deal with emergencies when the action must be quick and powerful, such as in situation of fight or flight. Fight or flight के जो situation होती है वो work करता है हमारा sympathetic nervous system. And during this period the digestion stops, blood flow from internal organs to the muscles, and breathing rates
is high, oxygen supply is high towards the heart rate, and blood sugar level is increased. क्या क्या होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो क्या होता है जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जो जा रहा है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हमारे लंग्स, हमारी किडनी को ना जाके बल्कि वो मसल्स की तरफ होने लगता है, बिकॉज मसल्स स्ट्रांग हो और हम फाइट और फ्लाइट एक्शन के लिए प्रिपेयर हो. ठीक है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, एंड हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होती है. ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन की तरफ ना हो के बल्कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ होने लगती है. ठीक है, तो ये सारे हमारी बॉडी में इंटरनल चेंज होता है ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज मेनली कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन सेविंग द एनर्जी. ठीक है, सिंपैथेटिक हमारी सारी एनर्जी को यूज़ कर लेता है, एग्जॉस्ट कर लेता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. बट पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक हमारी एनर्जी को कंजर्वेट करता है, कंजर्वेशन करता है और ये सेव करता है हमारी एनर्जी को. सो इट मॉनिटर्स द रूटीन फंक्शन ऑफ द इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये कहता है इट इज़ बेसिकली मॉनिटर द रूटीन फंक्शन ऑफ द इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी. व्हेन द एमरजेंसी इज ओवर द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन टेक्स ओवर and it decelerates the sympathetic activations and calm down the individual to a normal condition. As a result, all body functions like heartbeat, breathing and blood flow return to their normal level. क्या होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो बॉडी ऑर्गन्स की जगह बॉडी ऑर्गन्स की तरफ ना जाके बल्कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ होता है. ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है और हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है. ठीक है, और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है. दैट्स मीन हमें बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में वापस आ जाती है. जो इमरजेंसी की सिचुएशन रहती है, जो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है उसको वापस से बैलेंस में ले आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न. सो बेसिकली ये दोनों साथ में वर्क करते हैं इन अ कोलैबोरेटिव मैनर एंड द फंक्शंस ऑफ दीज टू आर वेरी मच अपोजिट. लुक एट द फिगर 3.4. यहाँ पे देखो दिया हुआ है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीज़न का क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. सो जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट है तो क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट है तो क्या क्या हो रहा है, दैट्स मीन द फाइट और फ्लाइट एक्शन. जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत एमरजेंसी सिचुएशन है, तो स्टिमुलेट्स टीयर ग्लैंड एंड डायलेट्स प्यूपल दैट्स मीन हमारी आई का पार्ट है वो डायल्यूट हो जाता है. टीयर ग्लैंड्स जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है. इनहिबिट सैलिवेशन, इंक्रीज स्वीटिंग, सैलिवेशंस को इनहिबिट करता है, दैट्स मीन रोकता है. एंड इंक्रीज स्वीटिंग को इंक्रीज करता है. एंड एसिलरेट हार्ट की पंपिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है. एंड डायलेट्स ब्रोंचिस को डायलेट करता है. डिक्रीज डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ स्टमक, डाइजेशन को कुछ टाइम के लिए रोक देता है या स्लो कर देता है. एंड द सीक्रेटेड एड्रेनलिन इज बेसिकली अ हार्मोन जिसको ये सीक्रेट करता है सिंपैथेटिक डिवीज़न. एंड डिक्रीज डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव फंक्शन को डिक्रीज करता है. कौन डिक्रीज करता है, बेसिकली एड्रेनलिन इसीलिए सीक्रेट होता है क्योंकि ये डाइजेशन के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है. इनहिबिट ब्लैडर को इनहिबिट करता है, ब्लैडर के फंक्शंस को, क्योंकि ब्लैडर और डाइजेशन सिस्टम में जो वर्क होता है इनका, या हमारी जो किडनी है, इन सब का जो वर्क होता है, लंग का, लीवर का, लंग्स का, तो ये सारे वर्क ब्लड नीडेड होते हैं. जब हमारे ऑक्सीजन और ब्लड लेवल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ होता है तब ये वर्क करते हैं. तो जब ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कुछ टाइम के लिए रेस्ट में आ जाते हैं और जो हमारा ब्लड फ्लो ऑक्सीजन लेवल होता है वो टुवर्ड्स दी मसल्स होता है ताकि मसल्स स्ट्रांग हो और मसल्स में एनर्जी हो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए. सो दिस इज दी होल फिनोमिना ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, किस तरह से ये वर्क करता है. नाउ लुक एट द पैरासिम्पैथेटिक. अब जब इमरजेंसी ओवर हो गई, ठीक है, इमरजेंसी खत्म हो गई है, अब बॉडी को वापस से इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में, एक बैलेंस स्टेट में लाना है, तो क्या क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल्स वापस अपने शेप में आ जाती हैं. इनहिबिट्स टीयर ग्लैंड, इंक्रीज सैलिवेशन, टीयर ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है एंड सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. स्लो हार्ट रेट को स्लो कर देता है. एंड कंस्ट्रिक्ट ब्रोंचिस जो वो डायलूट हो गया था, यहाँ पे ब्रोंचिस जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है. इंक्रीज डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ स्टमक की जो नॉर्मल डाइजेशन फंक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है.
देन इंक्रीज डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का भी जो डाइजेशन का फंक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, वर्क करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है. Okay, so this is the all about the peripheral nervous system. Peripheral nervous system basically two division, the somatic division and the autonomic division. Somatic division which mean voluntary action, autonomic that mean involuntary, which is not in our hand. Their autonomic nervous system basically has two divisions, the sympathetic and parasympathetic. Sympathetic work in an emergency situation, parasympathetic work in a you can say conservation of energy. ठीक है, एनर्जी को सेविंग करने में ये वर्क करता है. This is all about peripheral nervous system, which is very small topic and very simple as well as. And one thing I forget here, the somatic nervous system has the 12 pairs or 12 set of cranial nerves and 31 pairs or 31 sets of spinal nerves. Okay, these nerves are basically play a role to connection between the brain and the whole body. This is the picture which basically show the functions of parasympathetic nervous system and the sympathetic nervous system. What are the changes in our body, क्या क्या changes हो रहे हैं हमारी body में जब ये दोनों system one by one activate हो रहा है. तो this figure is basically shown, and there is also a somatic nervous system like cranial nerves and spinal nerves are also there. Okay, so let's look at a video for understanding better to the peripheral nervous system. The autonomic nervous system, or ANS, is the part of the nervous system that regulates activities of internal organs. The ANS is largely autonomous, acting independently of the body's consciousness and voluntary control. It has two main divisions, sympathetic, SNS, and parasympathetic, PSNS. In situations that require alertness and energy, such as facing danger or doing physical activities, the ANS activates its sympathetic division to mobilize the body for action. This division increases cardiac output, accelerates respiratory rate, releases stored energy, and dilates pupils. At the same time, it also inhibits body processes that are less important in emergencies, such as digestion and urination. On the other hand, during ordinary situations, the parasympathetic division conserves and restores. It slows heartbeats, decreases respiratory rate, stimulates digestion, removes waste, and stores energy. The sympathetic division is therefore known as the fight or flight response, while the parasympathetic division is associated with the rest and digest state. Despite having opposite effects on the same organ, the SNS and PSNS are not mutually exclusive. In most organs, both systems are simultaneously active, producing a background rate of activity called the autonomic tone, a balance between sympathetic and parasympathetic inputs. This balance shifts, one way or the other, in response to the body's changing needs. Some organs, however, receive inputs from only one system. For example, the smooth muscles of blood vessels only receive sympathetic fibers, which keep them partially constricted and thus maintaining normal blood pressure. An increase in sympathetic firing rate causes further constriction and increases blood pressure, while a decrease in firing rate dilates blood vessels, lowering blood pressure. The autonomic nerve pathways from the control centers in the central nervous system to the target organs are composed of two neurons, which meet and synapse in an autonomic ganglion. Accordingly, these neurons are called preganglionic and postganglionic. In the SNS, the preganglionic neurons arise from the thoracic and lumbar regions of the spinal cord. Their fibers exit by way of spinal nerves to the nearby sympathetic chain of ganglia. Once in the chain, preganglionic fibers may follow any of three routes. Some fibers synapse immediately with postganglionic neurons. Some travel up or down the chain before synapsing. Some pass through the chain without synapsing. This third group continues as splanchnic nerves to nearby collateral ganglia for synapsing instead.
From the ganglia, long postganglionic fibers run all the way to target organs. The SNS has a high degree of neuronal divergence. One preganglionic fiber can synapse with up to 20 postganglionic neurons. Thus, effects of the SNS tend to be widespread. In the PSNS, the preganglionic neurons arise from the brainstem and sacral region of the spinal cord. Preganglionic fibers exit the brainstem via several cranial nerves and exit the spinal cord via spinal nerves before forming the pelvic splanchnic nerves. Parasympathetic ganglia are located near or within target organs, so postganglionic fibers are relatively short. The degree of neuronal divergence in the PSNS is much lower than that of the SNS. Thus, the PSNS produces more specific, localized responses compared to the SNS.